Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 6 and our topic is Enjoying the Holidays from your book We Learn English Class 3 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. House number 76 Street 9, Iqbal Road, Karachi. Dear Neha, how are you? I am missing you but I am also enjoying myself in Karachi. I wish you were here. प्यारी नेहा तुम कैसी हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ पर मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा कराची में इंजॉय कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी कराची में हो। यस्टरडे वॉज संडे सो वी वेंट टू द बीच। कल संडे था तो हम लोग बीच पर गए थे। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आई मेड सैंड कैस्टल्स एंड कलेक्टेड सी शेल्स। कल संडे था और हम लोग बीच पे गए थे। हमने वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। मैंने वहाँ सैंड कास्टल्स बनाए और कुछ सी शेल्स कलेक्ट किए। माई फ्रेंड सैट ऑन अ कैमल। मेरी दोस्त जो है वो ऊँट पे भी बैठी। माई ग्रैंड फादर कॉट अ क्रैब। मेरे दादा ने एक क्रैब यानी कि केकड़ा पकड़ा। माई ग्रैंड मदर कुक चिकन एंड राइस एंड ऑल इन्जॉयड द फूड। मेरी दादी ने चिकन और राइस बनाए थे और हमने खाना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। लेटर वी सेल्ड इन अ बोट। और उसके बाद हम एक बोट में तैरे। होपिंग टू सी यू सून। उम्मीद करती हूँ कि तुमसे जल्द मिलूँगी। तुम्हारी प्यारी दोस्त सबीहा। नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ वेयर डिड सबीहा go? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.